अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ वो है बायोलॉजी का गेस्ट पेपर क्लास 9th का। ये पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए है। इनमें साहिवाल, गुजरावाला, उसके बाद लाहौर एट्सेट्रा ये सारे बोर्ड आते हैं। पंजाब के सारे जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उन सब के लिए ये गेस्ट पेपर है और इसके चांसेस है कि 99% पेपर इसी में से है। तो जिस बच्चे की कुछ तैयारी भी नहीं, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल, वो अगर एक रात में ये सारा कुछ याद कर ले, थोड़े सारे क्वेश्चंस, तो वो 100% रिजल्ट आपको दिखा सकता है। वो 60 में से 60 या प्लेन आपको करके दिखा सकता है। तो आप ये गेस्ट पेपर उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपके रिलेटिव्स है कोई जो भी है, मतलब जो बायोलॉजी का पेपर जिनका 9th का आने वाला है, आप उनको ये शेयर मस्ट करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आप जो अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ये आपने मस्ट रिवाइज करना है। और जिन बच्चों की आ गई बहुत अच्छी तैयारी है, आप समझते हैं हाँ भाई ये तो हमारा लायक बच्चा है, रहने दो, हाँ कोई गेस्ट पेपर नहीं करना, उसे भी आप पढ़ा दें। क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन जो उसके मतलब माइंड में ऐसे ना हो, मैंने जैसा क्वेश्चन आपको बना के दिखाए हैं, तो उसे पता चल जाए अच्छा ये अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये कैसे मैम बता रही हैं। तो वो आपने इसको अच्छी तरह वो आंसर आउट कर लेगा, इसका आंसर देख लेगा, अच्छा इसका ये आंसर है, तो वो अपने अच्छे नंबर्स अचीव कर सकता है। जो उसके कटने के थोड़े से खदशात होते हैं वो अच्छी तरह रिवाइज दोबारा कर ले मेरे क्वेश्चंस को, ये जो मैंने बताया है, तो उसके लिए बेहतर ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा उसके लिए। चले अब शुरू करते हैं। हिस्सा शायर का जो मुख्तसर सवालात हैं वो है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ मेंट बाय द हॉर्टिकल्चर एंड आल्सो डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद एग्रीकल्चर, define microbiology, define biochemistry and morphology, differentiate between morphology and physiology, define parasitology, define immunology। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है differentiate between environmental and cell biology, what is medicine and surgery, define pharmacology and immunology, what is the difference between agriculture and horticulture। उसके बाद what is meant by animal husbandry, describe major contribution of Jabir bin Hayyan, write down the contribution of Abdul Malik Asma'i। ये जो उनसे साइंसदान है तीनों, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी इसके आने के चांसेस हैं कि ये अबू अली सिन्हा कब पैदा हुए थे, इनको ये इनको क्या माना जाता है, इनको मेडिसिन लॉ ऑफ कानून माना जाता है, कानून का इनको साइंसदान माना जाता है, वो सारा कुछ। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वो अली सिन्हा, और पॉइंट्स के फॉर्म में इनको आपने लिखना है ताकि आपको चेक करके पहचान प्रश्न पड़े और आपको जल्दी जल्दी नंबर देते 2 से 2। From which two words the word biology is derived, write the meaning of the each word, differentiate between botany and zoology, differentiate between entomology and immunology, how biology helps in the field of horticulture, briefly describe the biosphere level, differentiate between vegetative and reproductive organs, write down the level of organization in sequence, what is meant by bioelements, differentiate between unicellular and multicellular, differentiate between species and habitat, the organ system level of animal is more complex than the plants, why। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 वाला। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोल्यूशन एंड कम्युनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। 28 वाला क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट एंड अ फ्रॉग, राइट यूजेस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, व्हाट आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाट आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, differentiate between theory and the lab, quantitative observation in biological method is more accurate, how are define biological method, give example of qualitative quantitative observation, what is the scientific method, how quantitative observation are better in the biological method, what is the biological problems, write down the important observation of AFA king, what is meant by incubation periods, man has been biologist since long, explain right to control of malaria, define hypothesis, which characteristic should be hypothesis have, what are deduction, define a deduction, define a control group, what is meant by reproducing the result, differentiate between deduction and the theory, define a law or principle, what is a reproductive theory, differentiate between qualitative and quantitative observation, differentiate between control and the experimental group, ये most important 53 वाला है। write down the observation of the Levin defined ratio and the proportion, write different definition of bioinformation। उसके बाद define biodiversity, what is the importance of the biodiversity for humans, how are taxonomy are systematic related। उसके बाद what is the aim of the classification, define taxonomy hierarchy। उसके बाद what is the classification of the man, what is the class and the order, what defines species and the genus,
उसके बाद राइट ऑफ द क्रॉस ड्यू टू द विच अ म्यूल pursued। इसके बाद डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरलियस लिनियस। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड द ऑर्डर। राइट ऑन the characteristic of the kingdom Monera. What are the characteristic of kingdom Protista? How many types of the Protist are there? Write their names. Write down the characteristic of the kingdom Fungi. Discuss viruses are living or non-living. What are the prions and the varioids? Defined by binomial nomenclature. Write two rules for the giving scientific names to living organisms. उसके बाद write down the scientific name of the human beings and plants. Differentiate between term exist and the endangered. Define endangered species. Write an examples. What are the causes of deforestation? Name three endangered species in Pakistan. Which is the national animal of Pakistan? Which is the what is meant by biosphere level? Briefly introduce the Hobra bustard and Marco Polo sheep. Differentiate between flora and fauna. What is the difference between arthropod and autotrophs and heterotrophs? Define magnification and define resolution and resolution power and resolution. Resolving power or resolution. Define microscopy and magnification. Write down any two principles introduced in a cell theory. What is a friction of leucoplast and chromoplast? Define plasmodesmata. Define semi-permeable membrane. Write down the function of the cell membrane. Write what is the fluid mosaic model of a cell membrane. Write to function of the cytoplasm. What are the leucoplasts and where do they occur? Why endoplasmic reticulum is called rough and smooth endoplasmic reticulum? What are the function of smooth endoplasmic reticulum? What is the role of the nucleus in a cell? Differentiate between centrosome and centrioles. What is the phragmoplast? What is the difference between primary and secondary wall of the cell wall of the plant? What is the difference between microtubules and microfilaments? उसके बाद give chemical structure of the cell wall of eukaryotes. और फिर next है differentiate between plasma membrane and cell membrane. Write the function of the Golgi apparatus. What is the cytoplasm? Write down its composition. What is chromatin? उसके बाद write down the difference between chromoplast and leucoplast. Differentiate between diffusion and facilitated diffusion. What is meant by hypertonic and hypertonic solution? Differentiate between diffusion and osmosis. Define passive transfer. Define facilitated diffusion. Define plasmolysis. What is the active transfer? Differentiate between endocytosis, exocytosis. Differentiate between phagocytosis and pinocytosis. Define endocytosis and write its name and its type. And write the name of its types. Define turgor pressure and the turgor. Differentiate between simple tissue and the compound tissue in the plants. Define spore tissue. What is its type? उसके बाद next है right function of the xylem and the phylum tissue. Define cell cycles. What is meant by G1 phase in the cell cycles? What explains G0 phase? What is interphase? Right, name of its phases. Define germline cells. Differentiate between somatic and the germline cells. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको मस्ट याद करना है, रिमाइंड करना है बच्चों ने. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. डिफरेंशिएट डिफाइन माइटोसिस इन विच सेल डज इट अकर्स. डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. Next question, define cleavage fever. What is a tumor? Give an examples. What is meant by regeneration? Give example. What is the difference between benign and malignant tumors? Why are the tumors dangerous for the human body? Define metastasis. उसके बाद next है what is mitosis spindles. उसके बाद what is alternation of the generation. What is binary fissions. Define crossing over. Define chiasmata. Define meiosis and mitosis. What is define meiosis and mitosis? What is the difference between disjunction and non-disjunction? What are the effect of the error in meiosis? When and how discover meiosis for the first time? What is the necrosis? Necrosis भी most important short question है. ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन इज टू कॉसेस. डिफरेंशिएट बिटवीन अपोप्टोसिस एंड ब्लैब्स. What is a phragmoplast? Differentiate between cytoplasm and cannibalism, anabolism and catabolism. What is define the term enzyme and the substance? Define activations enzymes, how enzymes affect on it. Define active site, how it and also write its functions. आगे define inhibitors. Define cofactor. What are the prosthetic group?
व्हाट आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने मस्ट रिवाइज करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटीज एंजाइम्स एंड अमाइलेज एंजाइम्स। ये जो से यूजेस ऑफ एंजाइम्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने रिवाइज करना है। इसमें डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है और आपसे एक सेपरेटली भी करके पूछा जा सकता है। इसमें आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, इसके आपसे इधर से एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा आपका। उसके बाद व्हाट इज द लॉक एंड की मॉडल, व्हाट इज द इंड्यूस फिट मॉडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, व्हाट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, डिफाइन एटीपी एंड डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने इसकी अगर वो इक्वेशन नहीं भी पूछते तो आपने एक्सप्लेन करनी है, इससे आपको वो मतलब श्योरली आपको मतलब वो 2 नंबर आपको दे देगा। क्या मतलब बच्चे से हमने एक्सप्लेन भी नहीं की तो देखो उसने हमें दे दिया। बच्चा पढ़ने वाला है, इस पर चैप्टर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपने इसका मतलब एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखना है, फार्मूला आगे तो फार्मूला लिखना है, जो भी चीज़ है वो आपने मस्ट आगे लिखनी है। अगर किसी की डायग्राम है तो डायग्राम भी आपने बनानी है। Write down the necessary condition for photosynthesis. What are the light reaction? What are the dark reaction? What are the different pigment in the chloroplast? To define the term limiting factor in the photosynthesis. Also given examples. What is role of light in photosynthesis? Define osmosis. What is the difference between light reaction and the dark reaction? Define aerobic respiration. Define respiration and cellular respiration. Define alcohol fermentation. Define lactic acid fermentation. Define glycolysis. Where does it processes occurs? What is the importance of the aerobic and anaerobic respiration? What is Krebs cycles? What is the difference between respiration and photosynthesis? What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? What do you know about electron transport chain? Define nutritions. What are the nutrients? What are the autotrophic and the heterotrophic organisms? Differentiate between nutrients and nutrition. What is the difference between organic and inorganic fertilizers? Differentiate between macronutrients and micronutrients. What is the importance of the fertilizer in agriculture? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पिछली दफ़ा भी बोर्ड में पूछा गया था तो आप अच्छी तरह इसको याद कर ले। What is the role of calcium and the magnesium in plant life? What is the role of magnesium in plants? मैग्नीशियम का जौन सा प्लांट्स में किरदार होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इससे आपकी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होती है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरह कर लें। हाउ कैन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज ब्लाइंडनेस? राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. What are important source of lipids? What is the difference between saturated and unsaturated fatty acid? Write any 2 role of calcium in humans. What role is played by iron in humans? What is goiter? How it can be cured? Differentiate between fat soluble and water soluble vitamins. From which sources vitamin A and vitamin D are obtained? What are the function of vitamin A, C and D? Write down the names of the diseases caused by the deficiency of vitamin A. Write down the name of 2 diseases produced due to the deficiency of vitamin D. Deficiency of which vitamin causes osteomalacia? Write down one symptom. उसके बाद what is a scurvy? Write down its symptom. What are the sources of soluble dietary fibers? What is a balanced diet? Define malnutritions. मतलब इसमें मतलब है खाने की कमी. Also give the name of any 2 types of malnutrition, ये भी most important है. What is a protein energy malnutrition? Name the major causes of famines. What is meant by starvation? What is drought? Also to write its disadvantages. Write symptom of goiter and anemia. Write sources and effect due to the deficiency of vitamin D. What is a night blindness? How will you differentiate between bolus and chyme? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेक्शन एंड डाइजेशन, ये जो उनसे 5 इसके मतलब इधर डाइजेशन के लिखे होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस के पता मतलब सीक्वेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बॉक्स में जो आपका लिखा हुआ है वो आपने अच्छी तरह याद करना है. राइट द नेम ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. व्हाट इज अ स्पिंस्टर? What is the difference between cardiac sphincter and pyloric sphincters? What is a gastric juice? Name the enzyme present in the gastric juice. Write a short note on a gastric gland. What is appendix? Write to function of large intestine. What do you know about liver? What is the role of liver in digestive system? Write any 3 function of liver. Differentiate between eutrophication and ingestion. Differentiate between assimilation and absorption. What is diarrhea? How can it be cured? What are causes of diarrhea? What are the causes of constipation? What are the major causes of ulcer?
enlist preventive measures to save from ulcers. What are the lenticels and where they are found in plants body? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड वाला जो मैं अब नेक्स्ट बोलने जा रही हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पिछली दफ़ा बोर्ड में पूछा भी गया था, पिछली दफ़ा। डिफाइन द कोहेरेंट थ्योरी, टेंशन थ्योरी। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज एंड सिंक अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। Define transpiration. What are the lenticels? Where they are found in the body, plant body. What is the important of the transpiration? What is the transpirational pull? ये भी most important है। Write down 2 reasons for the creation of transpiration pull. उसके बाद why transpiration is called a necessary evil. What is the effect of the humidity on the rate of the transpiration? What is the source in the transport of the food? Again, next question है what is the stomatal transpiration, differentiate between mesophyll cell and God cell. ये भी most important short question है। What is osmosis, how temperature affect transpiration. ये भी important है, most important मतलब अच्छी तरह आप कर ले, किस दफ़ा इसको भी पढ़ ले। most important ही मतलब आने के chances है इसके भी। What are the 2 main types of the white blood cells, how do they differ. ये most important side box है ये आपका। Define the terms systoles and diasystoles. उसके बाद differentiate between arteries and veins. What is the blood? Write down the total volume of the blood in the adult humans. उसके बाद next question है what is the fibrinogens. For write down the function, write down name of the 2 system of the transport of the materials in the human. Define closed blood circulatory system and also write 2 main component of the human body circulatory system. Define pulmonary circulation. What is the systematic circulation? What is the difference between antigens and antibodies? What is the difference between granulocytes and agranulocytes? What is the white blood? What are white blood cells? Name its 2 main types. What are the function of neutrophils and basophils? What are the platelets? Write what is their function. How are called universal recipient? Why? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह याद करना है। व्हाट इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, हाउ डज द ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पीछे बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करें। What is the relationship between heartbeat and pulse rate? Differentiate between arteries and capillaries. Write down nature of the function of the vascular surgeons. Why bypass surgery is done. Write down 2 achievement of William Harvey. What is thalassemia? What is pericardial fluid? How it is functions. Differentiate between cardial diastole and ventricular systoles. What is meant by cardiac cycle? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन लब एंड डब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साउंड को कहते हैं लब और डब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शन है स्टेथोस्कोप का, राइट फंक्शन ऑफ स्टेथोस्कोप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय एगिना पेक्टोरिस। उसके बाद राइट इट्स द सिम्टम्स। व्हाट इज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, राइट इट्स कॉजेज। व्हाट इज प्लेक्यूस, व्हाट इज मेंट बाय आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। What are the cardiovascular diseases? What is their causes? What is atherosclerosis? अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जो मतलब आगे लॉन्ग क्वेश्चन का आपका पेयर है वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे, अच्छे नंबर से कामयाब करे आपको, और आप किसी के भी मतलब आप लोग को मतलब अच्छे नंबर ना आने की उम्मीद हो तो आप ये गैस पेपर अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले, आप इंशाल्लाह फुल आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर अपने फुल मेरी गैस पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया आप यही करते हैं। या आपके साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अभी आपको अपलोड कर देती हूँ। शुक्रिया।